Hello everyone, this is Adya and you are watching 3D Studies, and today we are going to have lecture number 3 from class 11th periodic classification. As in my first lecture I had discussed a lot about what kind of history is required by us to remember our periodic classification and how we came to know about modern periodic table. In our second lecture all about modern periodic table and came across four kind of classification of the element as S block element, P block element, F block element, as well as here D block element. And you know what? Today it's gonna be your lecture number 3, which is gonna be super interesting. So without further ado or talking, let's move ahead and let's talk about what is we're going to have today. So in today's lecture, I'll be covering all four blocks, right? What are the four blocks? F block, P block, F block, and your D block. As I told you where I left that S block element, P block element, D block element, and your F block element. As I told you, from group number 1 to your group number 2, your S block element lies. Talking about your P block element, from group number 13 to group number 18 is your P block element. Talking about your D block element, from group number 3 to your group number 12 are called your D block element. And yes, for the same, all your actinoids and your lanthanoids occurs in F block element. See, I just gave you a little idea of where we are gonna begin today. So listen very carefully. All the four topics, including your S block, P block, G block, and F block, we will be understanding in somewhat detail. And you know what? I will be telling you the tricks or the short notes that is required for remembering all the four groups before understanding in brief of all the four topics. Okay, so let's begin it and understand and start with our video with S block elements. Well, the topic goes as our S block elements. S block elements. Okay, so let's talk about S block element. Before entering to the topic of S block element, I just told you S block element carries of your two groups, group number 1 and your group number 2. And listen everyone, group number 1 and group number 2 are carries of your elements. And what are their elements? Let's talk about. So group number 1 carries of your as so these includes your group number 1. As in YouTube and many books and further your website, many tricks and mnemonics are given up for remembering elements in our periodic table. As count for same here, you might can remember it if you are able to remember all the elements in the periodic table as in frequent way. That's amazing and incredible. But if you remember the mnemonics, that's still not bad one idea, right? So for group number 1, I'll be telling you the mnemonics as the very common mnemonic is Halina ki dab se faryad. What is the mnemonic? Halina ki dab se faryad. A very common mnemonic and easy to remember the elements in group number 1. As there's no trick required for understanding group number 1 element, but many from us confused behind remembering the elements, so you can use this particular trick, right? Now listen one thing. As hydrogen start with your atomic number 1. Now your S block element and P block element and requirement is for remembering their atomic numbers. How to remember it? That comes a very, you can say, a difficult kind of thing for all of us to remember.
So let me give you an example how you can remind it. Just remember this 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. So by this you would be able to clarify which of the group having the elements and their atomic numbers are. So listen, as I have Z is equals to 1, adding on 2 it is, we are gonna get is Z equals to 3, which is neither more than atomic number for your lithium. Clear? Now what I'm gonna add in this 8, we are gonna get atomic number for your sodium, that's no more than 11. Talking of your so on elements, that is adding on your 8 again, you wanna get is 19 for K. Talking about your uranium, Z equals to your, again adding on your 18, you would be getting 37. Adding on your again 18, you would be getting your 16, 5, 55. Adding on your again 32, you would be getting 87. So these are the elements with their atomic number. As you can see, I no more require any kind of periodic table to remind the atomic number all of these elements, right? I hope this finds you helpful. Now, one more interesting thing that the topic comes in this is writing on electronic configuration of these elements. So, I'm drawing a table for the same, group number 1. And for the same, I would be doing in group number 2. Okay? So, talking about the electronic configuration of group number 1, let's talk about. So, as I told you in my first lecture that writing the electronic configuration by the use of your noble gas or inert gas, that shows a moreover stability of an element. So, for writing the electronic configuration, we use inert gases or noble gases. And what are your inert and noble gases are? Your helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. So these are your 336 noble gases, and this particular group is of your p block element, group number your 18, right? So see, what is the thing? I'm going to use these all inert gases for writing the electronic configuration of these elements. So for hydrogen, no need of writing the noble gas. We can directly put it as 1s1. Okay? For writing a lithium electronic configuration, we are going to use helium 2s1. Talking about your sodium, we came across neon 3s2 and so on. I'm going to use argon 4s1, then your krypton 5s1, then your xenon 6s1, clear? And your radon Rn, that is your 7s1. Now in this table you can clearly see the valence electron or the outermost electronic configuration goes in the form of, I'm writing here, that is your in the form of ns1. You can clearly see what I wanted to say here. Now if I ask you what is the valency or the outermost cell in group number 1, valency or outermost cell in group number 1, that's no more than your 1. You can see in the outermost cell the electrons is only 1. So what is the valency here? 1. I hope you are crystal clear with the topic number 1, that was your group number 1 from S block elements, right? Now let's jump upon the second group, that is your, from S block element only. So let's talk about group number 2. Now, as here we use the mnemonic Halina ki rab se faryad, here I'm going to use again the common mnemonic, that was your beta, mange, car, scooter, bab, razi. So this is the mnemonic for group number 2. I hope this is clear. That is your beta, mange, okay, it's beta, mange, car, scooter, bab, razi, okay? Now again I'm going to put Z equals to.
So, remembering of your periodic table, it comes like hydrogen, helium, lithium, beryllium. Jet goes as 4. So again, I'm going to put 4, then jet again for the same. Again, we are gonna take the use of this particular table I just told you before starting of S block element. And yes, here we are not going to use 2. Instead of 2, we are going to start with the 8, 8, 18, 18, 32 and so on. So let's, without further any ado, let's begin it adding on 8 and 4. You would get 12, adding on again 8, you would get 20, adding on 18, you would get 18, you would get 8 to 1 3. Okay, it's 8 to 1 3. Again adding on your 18, you would get 56. Again adding on your 32, you would get 88. So you can clearly see the atomic numbers of all these elements is going on right. How? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Like this our table goes. So see, hydrogen then lithium, hydrogen then helium, lithium then beryllium. So after lithium it comes your beryllium, and you can clearly see lithium is your 3 and beryllium is your 4. After sodium it comes your magnesium, potassium it comes your Ca. So here sodium, after sodium is coming your magnesium, jet number 12. So you can clearly see that that this particular table matches with our atomic numbers of the element. I hope so. Again, it found you helpful. Now writing on electronic configuration of these elements, like, see everyone. Now here I'm going to use directly our noble gases for writing the electronic configuration. That would be your helium 2s1. Okay, it's 2s2. Then comes your magnesium, that is your neon 3s2. Then for Ca you are going to use as argon 4s2. Then krypton 5s2. Then xenon 6s2. Then radon 7s2. So what's the common electronic configuration for group number 2? We get it. That is your, you can clearly see ns2. And again, the valency. Yes, you are writing in the comment below. That's amazing. Here valency for group number 1 was 1, and here the valency is 2. I hope you understand group number 1 and group number 2 of S block element in some more detail. Now let's talk about the properties or what we obtain from group number 1 and group number 2. And also, before moving to the property, I would like to say all the elements in group number 1 are also called your alkali metals. And similar goes for group number 2 are called your alkaline earth metals. So remember these two things. Let's move ahead. Okay. Okay, now let's talk about the properties for S block elements. Properties for S block elements, right? For S block elements. So let's talk about the properties for S block element. So property number 1 is your, okay, property number 1 carries of your, see, property number 1 is that S block element here, all metals are soft metals. Clear? Secondly, second topic comes your group number 1 are your alkali metals, and group number 2 are your alkaline earth metals. Talking about your third property, that is they are the good conductors. S block elements are good conductor of electricity. Let me write it. I'm going to explain it again. Don't worry it. Okay, group 4, 5, 6.
So what is the fourth property of S block element? They have the low ionization enthalpy. Okay, it's enthalpy. Also, they have their reactivity increases down the group. Also, they have low melting and boiling point. Seventh is your, what is the general electronic configuration for all them? General electronic configuration. General electronic configuration lies from NS1 to 2. Okay, I hope this sounds you helpful. What is S? Okay, what are the properties of S block element? Let me repeat it again. Number one, all metals are soft metals. In S block element, I just told you there are alkali metals and alkali metals, and they all are your soft metals. As they are soft metals, you can add one more point that they are good conductors of heat and electricity. Talking about your fourth point, they have low energy, low ionization enthalpy. Talking about your reactivity, down to the group increases, and they have low melting and boiling point, and their general electronic configuration lies from NS1 to NS2. Okay. Now also again, in this include your, okay, as group number one, your alkali metal. Remember, in alkali metal there is an exception. There is an exception, and what is exception? Except your hydrogen. Every element in group number one are called your alkali metals. Similar goes for group number two. Group number two, that is your exception is your beryllium. Okay, what is this? Beryllium. Beryllium is an exception and hydrogen is an exception in group number 1 and beryllium in group number 2. Hopefully clear. Now you would ask me, ma'am, every point is crystal clear, but we didn't get this particular point, that is low ionization enthalpy. What does mean? We didn't get it. See, remembering of low ionization, remembering of ionization enthalpy down to the group or S block element is low. Why? That wait. Ionization enthalpy of S block element low क्यों होता है, right? The reason behind or how to remember it, let me explain you, and you would definitely able to learn it, right? You can take the screenshot of this if you want. So, see, before moving to the P block element, I would like to explain one thing to you. What I wanted to explain, see very clearly, right? I was talking about ionization enthalpy or energy. They are both lies in the same category. Now see, clearly see it. This is your structure of periodic table. Okay, there comes few terms, that is your like atomic radius. Secondly, it comes your what comes your electronegativity. And your third comes your ionization enthalpy or energy. So these trends in our periodic table are must to remember by us. And you know what? Many from us are not able to recognize this during the examination. So how to remember it? Let me give you an example. See, atomic radius, electronegativity and ionization enthalpy. You is required to remember these all terms at one side. Like either you learn from up to down or you learn from left to right, whatever you want. Today I will be telling you from up to down, और जो चीजें मैं up to down बताऊंगी, you would be getting it like up to down जो चीजें मैं बताऊंगी, and you are required yourself to opposite that all the terms which I just told you for all the
three terms from up to down and you will get the answer for left to right. And listen, I'm not here to tell you the tricks. You would go to your whatever you want to go at your books or definition. You will find out the definition for the same, but you would not able to understand a little thing. Here I am to give you an example. See, होता क्या है, आपके जैसे कि एलिमेंट है, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है एंड रुबेनियम है एंड सो ऑन. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना एवरीवन, यू वुड क्लियर इट आउट. देखो होता क्या है, आपका जैसे हाइड्रोजन है, आई जस्ट टोल्ड यू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 क्यों पड़ा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए. ठीक है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए. सो देखो जैसे कि आई जस्ट टेक इट हाइड्रोजन, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इट इज वेरी क्लियर कि उसके पास 1 प्रोटॉन होगा. तो लाइक चार्जेस है तो अनलाइक चार्जेस तो होंगे ही, राइट? यू नो व्हाट? सो हाइड्रोजन हैव योर 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. नाउ सी वेरी केयरफुली, as we move down to the group we find out the element. I'm not repeating anything, just see. As we move down to the group we found some elements. Clear? Here the elements could be your, after hydrogen is your lithium, sodium. Now see, as lithium we know Z is equals to 3, so it will carry your 3 electrons. Similar goes for sodium, 11 electrons and so on. So you can clearly see हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की values increase हो रही हैं and your electrons, the value of electrons is increasing, so what, your protons is also increasing. Clear? Now the size of, if I talk about the size, you can clearly see hydrogen का size सबसे छोटा as comparison of the second one. फिर एज थर्ड की कंपैरिजन में सेकेंड वाला छोटा है ना. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सो ऑन. ये एक ही सीरीज की बात नहीं हो रही है, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं मैं उन सब की बात कर रही हूँ. इन द पीरियोडिक टेबल क्या होता है, जितने भी ऊपर के एलिमेंट हैं उन सबका साइज क्या है, छोटा है ना. एंड डाउन टू ग्रुप जैसे जैसे हम लोग जाते हैं उनका साइज बढ़ता है. भाई क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, दैट इज व्हाई उनका साइज इंक्रीज करता है. तो इट इज वेरी क्लियर दैट एटॉमिक रेडियस, you know, atomic radius clarifies your size. ठीक है, atomic radius describes the size, that is why from moving up to down the group your atomic radius increases. up to down, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है. पहला पॉइंट. आई होप यू आर क्लियर विथ. टॉकिंग अबाउट लेफ्ट टू राइट, मैम आपने कहा कि अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होता है साइज. अब आई विल डू अपोजिट ऑफ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस. लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करेगा एटॉमिक साइज. तो ये कैसे सही है, हाउ कैन आई ट्रस्ट ऑन यू कि ये बात भी सही होगी. तो सी, लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं. जैसे कि आपका था, आई जस्ट टॉक यू हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन. सो सी, दिस इज द पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर. हाइड्रोजन यहाँ होता है, हीलियम यहाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सी ऑन. Here's what happened it, your size decreases. अब you will say how? भाई यहाँ पे भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, कैसे आपने कह दिया साइज डिक्रीजेस? बिकॉज here's the reason again. यहाँ पर क्या होता है, आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज करते हैं. गोइंग ऑन लेफ्ट टू राइट आपके प्रोटॉन्स की इंक्रीज हो, प्रोटॉन्स जो है आपके इंक्रीज करते हैं. ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंस, योर साइज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, moving from left to right in the periodic table, and due to that if size decreases the atomic radius automatically decrease hota hai. I hope this point is clear to you. ठीक है? Okay, talking about your electronegativity and your talking about your electronegativity and ionization energy, see very clearly. इसी में देखो आप लोग, what is gonna be ionization energy की बात करें, enthalpy पे they both are same. Now see everyone, अभी हमने हाइड्रोजन की बात करी. हाइड्रोजन में आपके 1 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है. टॉकिंग अबाउट डाउन टू ग्रुप, किसी भी एलिमेंट को ले लो. ठीक है, हाइड्रोजन से बड़ा किसी भी एलिमेंट को ले लो. आई कुड टेक हाइड्रोजन, लिथियम ले लो भाई. ठीक है,
ठीक है, आपकी मर्जी, लिथियम ले लेते हैं। लिथियम में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2 प्रोटॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब वेरी क्लियरली सी, अगर आई ब्रिंग अ मैग्नेट ओवर हियर and I want to remove this particular electron, I want कि ये इलेक्ट्रॉन है भाई, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स को मुझे खींचना है अपनी तरफ, ठीक है। सिमिलर गोज फॉर लिथियम, लिथियम है पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे खींचना है। व्हाट यू थिंक कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? You know what? Particular of lithium, and you are going on a right way. See how? देखो भाई, यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियस है, राइट, which carries your proton, वहां पर आपकी जो स्टेबिलिटी है बिटवीन और अट्रैक्शन है बिटवीन योर इलेक्ट्रॉन एंड योर पॉजिटिव चार्ज, वो बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू जितने भी लोअर आपके जो एलिमेंट है। व्हाट आई वांटेड टू से, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, हाइड्रोजन, हीलियम, मैं एग्जांपल ले रही हूँ इसलिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होगा, जितना पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के होगा, जितना पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के होगा, वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना या खींचना through any kind of energy, right, or enthalpy, which will be much more tougher than taking out the electron from the element which have the larger atomic size. I hope you understand. So that I wanted to say कि यहाँ पे क्लियर है ना, साइज छोटा अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, और कोई भी एलिमेंट को, कोई भी इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकालना वाज मच टफर देन भाई की, यू नो, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो जो बाहर का बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको तो आराम से निकाल लेंगे भाई, जो प्रोटॉन है वो तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एनर्जी ज्यादा लगाए ना कि बाहर वाले पे, सिंपल। सो ड्यू टू दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम अप टू डाउन, साइज इंक्रीज होता है तो एनर्जी डिक्रीज होती है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसी में मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाती हूँ। यू वुड केम अक्रॉस द यूट्यूब वेबसाइट, द गूगल वेबसाइट on dealing with the definition of electronegativity and you will not clear about that, right? So electronegativity में क्या होता है? Electronegativity एक, you know, एक kind of energy है which is produced, or I can say it's an energy which is required to attract a shared pair of electron. What I wanted to say is कि electronegativity is an energy which is required to, you know, attract any kind of, I can say any kind of electron from the valence shell. अब इसको समझने के लिए you are required to know effective nuclear charge, जो इसी चैप्टर में आगे बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे हम डिटेल में कवर अप करेंगे, बट यहाँ पर एक आइडिया दे देती हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय क्या होने वाला है। सिमिलर गोज फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या हुआ था, अप टू डाउन डिक्रीज हुआ था, तो इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। चलो ठीक है, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पता चलेगा। अब देखो, टॉकिंग अबाउट योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो क्या होगा, होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज करती है। यू वुड से हाउ, आई वांट द आई वांट द रिजल्ट दैट हाउ यू कैन से दैट अप टू डाउन जाने पर, you know, going on from up to down to the group of the periodic table, you came across the electronegativity as the decrease. How? So the reason behind how is, see, ऊपर से नीचे जाने पर up to down you came across की size increases, and if the size increases your effective nuclear charge decreases, and if the effective nuclear charge decreases your electronegativity decreases. See, what is effective nuclear charge? अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है बिफोर अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ for understanding electronegativity we are required to jump on the topic effective nuclear charge. So effective nuclear charge is like, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका अट्रैक्शन भी होगा, रिपल्सन भी होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इस पर अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे, ठीक है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकलेगा, वी विल केम अक्रॉस अ फॉर्मूला दैट अगर हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के जेड से, एटॉमिक नंबर से, सारे के सारे
रिपल्शन को हटा दे। What I just told you, अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच किसी भी तरह का रिपल्शन ना रहे, नो मोर रिपल्शन एग्जिस्ट अराउंड द इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन के आसपास किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का रिपल्शन ना रहे, देन व्हाट विल लेफ्ट, ओनली लेफ्ट इज अट्रैक्शन। ठीक है, नाउ एज आई जस्ट टोल्ड यू, हाइड्रोजन में क्या केस था, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन भाई इतना ज्यादा है कि रिपल्शन का कोई केस ही नहीं बन रहा है। टॉकिंग अबाउट योर डाउन टू द ग्रुप, क्या हो रहा है, रिपल्शन भी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली डिपेंड करता है जेड माइनस रिपल्शन विच इज योर अट्रैक्शन, जेड विच इज योर एटॉमिक नंबर माइनस योर रिपल्शन गिव्स योर अट्रैक्शन। अब जहां पर एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर अट्रैक्शन, तो जहां पर अट्रैक्शन ज्यादा वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। एज आई जस्ट टोल्ड यू, as in the first element of your group number 1, that is your hydrogen, attraction भाई बहुत ज्यादा है, at peak there is a attraction। and talking about down to group, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन क्या होता है, लूज होता है। एंड जहां पर अट्रैक्शन लूज होगा वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना, क्लियर। अप टू डाउन जाने पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा है, ऊपर। नीचे जाने पर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, लो। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर जेड इफेक्टिव डिपेंड ऑन योर अट्रैक्शन। सिमिलर इजी ट्रिक टू रिमेंबर इट, बाय अट्रैक्शन डिपेंड है, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा ऊपर है, नीचे जाने पर अट्रैक्शन लो हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर भी लो होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी कि लो, लो होगी, सिंपल। Okay, now let's talk about the p block element. I hope you understand all about atomic radius, electronegativity and ionization energy or enthalpy. Now let's talk about your p block element. Now p block element, I just told you, it starts with group number 13 and ends in group number 18. So see, before understanding of your p block element, let's talk about one by one. That is your group number 13. Okay, now as group number 13, again the mnemonic you could use it for 13th group element, which is also called your boron family, which starts with your B, which is your boron. So it's like it's been like bangan, aloo, gajar in thala, right? So you can remember it by boron family, which is your from B to TL, right? Now talking about your jet, again gonna use the same kind of trick. That was your 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. Hence boron start with your hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron. That's your Z is equals to 5. So I'm gonna write it, your Z is equals to 5. Okay, okay. Now I'm gonna add in this plus 8. And first case में हमने क्या करा था, ग्रुप 1 में 2, then 8, 8, 32 and so on. ग्रुप 2 में हमने क्या करा था, 2 को हटा दिया था, then 8, then and so on, 8, 8, 18, 18 and so on. Here's what, हम 8 को फिर से हटा देंगे and we will be came across 8, then 18, 18, 32 and so on. Okay? Adding on 8 in this, Z is equals to 5. Z is equals to your 13. Adding again in this 18, you would came across 31. Again adding Z is equals to, in this particular 18, again you would came across 9, 2 and 4. Again adding on your here, that is your again adding on your 32, you would came across 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8. This is the atomic numbers for all the elements of your group number 13 boron family. Okay, and it was easy further for writing the atomic number for all the elements. Talking about your electronic configuration, which I just gonna denote by EC, and how to write the electronic configuration. Again, I'm gonna take the help of your noble gases, which start with your helium, neon, argon, krypton, xenon. Okay, now helium starts with your 2s2, 2p1. So this
particular boron family of group number 13 electronic configuration. How to write it? 2s2 2p1, and here's what what changes is the number or the value of n. Here again I'm going to write it 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, and 6s2 6p1. So what is the general electronic configuration for boron family? That is your ns2 np1. I hope this is clear to every one of you. That's all for your boron family. Talking about group number 14, that is your carbon family. Now, for understanding the carbon family, you are required to know the again mnemonic for the same. Kahe Shiv Ji, Kahe Shiv Ji. Okay, it's like Kahe Shiv Ji, Sune Parvati. Right? Kahe Shiv Ji, Sune Parvati. Kahe Shiv Ji, Sune Parvati. It will like that your carbon family. Okay? Again, you would be reminding of jet. So here's your hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. That starts with jet number 6. And we will be having the same series adding on 8, 18, 18 and 32 for that too. So adding on 6 with your 8, again you would be, so adding on 6 to 8 you would be came across your 14. Again z is equals to your adding on again in your as similar as 18 you would be came across 32. Z is equals to adding on your 18 you would be came across your 50, adding on your 32 you would be came across your 82. So this is the atomic number for all the element which lies in group number 14. Writing on the electronic configuration for group number 14 would be like helium. Again I'm going to use the noble gases helium, neon, argon, krypton, xenon. Clear? Again I'm going to use the I can say the electronic configuration as 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2, and the general electronic configuration I came as ns2 and p2. I hope you are clear with boron family and your carbon family. How to write it I'm just telling you. देखो सिंपल है, इतना याद कर लोगे सफिशिएंट है. बोरॉन फैमिली लिखा आपने 13 ग्रुप को. How to remember it I just told you. How to write the how to write the atomic number I told you, and how to write the electronic configuration I just told you. ठीक है, इतना sufficient है. And talking about what you are waiting for, the properties for your p block element we'll be discussing after we discuss the group from 13 to 18. Right? Now let's talk about your group number 15, which is your group number 15, which is your nitrogen family or nictogen. What is that? Nitrogen family or nictogen, right? Now let us start with your nitrogen family. That is your again mnemonic I'm going to use it. Nana Patekar, Aishwarya, Sab, Bima. Okay, how it start with Nana Patekar, Aishwarya, Sab, Bima. Okay, so again I'm going to use a similar thing, which was your group number. It will start with group number 7. Okay, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. Okay, it will start with atomic number 7. And again I'm going to use the same trick, that is adding on 8, adding on 18, adding on 18, adding on 32. So how to do that is 3, that is equals to 50, 51, that is equals to 81, 82, 80. Hopefully clear how to write the atomic number of the elements. Talking about writing the electronic configuration for all them, how to write it again? Helium, neon, argon, krypton and xenon. Okay? How to use it? 2s2 2p3. Now see what the changes in writing the electronic configuration from 13 to and so on. Here ns2 begins with all the elements same. What changes is np1, np2, and here's what your np3. Okay? Let me write it. I'm going to tell you. So what is the general electronic configuration for your 15th is your
NS2NP3. I hopefully see you would be able to see what is the general electronic configuration for your nitrogen or nitrogen, that is your NS2NP3. Talking about your group number 16, that is your okay, that is your 16, which is your oxygen, no more oxygen family or halogen, also well known as halogens, right? So see, मैं और वाले names क्यों बता रही हूँ? Because many time in exam there came across कि भाई what kind of element are present in your nitrogens or halogens, so you might get not confused during that particular thing. Okay? So yes, group number 13 start with your oxygen, and for same oxygen we will be reminding the mnemonic, that is your old style stay ho. What is that? Old style stay ho. Okay? So again, Z is equals to, for oxygen is your 8. For again I'm gonna use the same things, and yes, that for S is your 16, Z for Se is your 34, Z equals to 52, and Z is equals to 84. Okay? Clear? Writing on the electronic configuration, same everyone. That is your helium, neon, argon, krypton, xenon, and your 2s2 same, and 2p3 की जगह 2p4 आ जाएगा, 2p4. So 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p5, 6s2 6p6. So what is the common electronic configuration for your 16th group is ns2np6. I hope you all are clear with group number 13 to your group number 16. Group number 13, boron, then your carbon, then your nitrogen, and then your oxygen family. Okay? Now let's jump on group number 17 and group number 18. Fatafat. Okay? If you want to take the screenshot, you can take it, and then we will be moving ahead with group number, where we left it 16, and then we will be having group number 17 and 18. Okay? Okay. Talking of your group number 17, it's gonna be very interesting because group number 17 carries of your halogens, right? So let's discuss it of your halogens. Okay, so let's talk about your halogens. Now, how to remember them? So halogens might be clear to every one of you कि कैसे fluorine, chlorine, bromine, iodine, AI. Okay? या फिर you can remember it by first class biryani I8. है ना, ऐसे याद कर सकते हो कि फर्स्ट क्लास बिरयानी आई, लाइक ओके. सो टॉकिंग अबाउट योर Z is equals to, for the same, okay, for fluorine you have 9, is your 17, bromine 35, iodine is your, I hope so, it is your, adding on your 8, 18, and again 18, you will be came across 53 and your 85. Okay, so this is your halogen family atomic numbers. I repeated electronic configuration for the more time. Sorry for that. Well, writing on electronic configuration, it's gonna be so similar as the before. And yes, helium, neon, argon, krypton, xenon, and yes, that was just 2s2, 2p, and we end with 2p4, right? And here says 2p5. Again, the similar thing goes with, and the general comes as ns2np5. Yeah, talking about your 17th group, and P block element is gonna be your group number. Okay, group number. See my writing where it's going. Okay, it's group number 18. That is your inert gases or noble, not noble prizes, it's noble. So what is group number 18 carries your inert gases and noble gases. I just told you we will be discussing about कि जो जितने भी हम लोग यूज कर रहे थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन, यहाँ ये कब आने वाले हैं? तो ये आपके आएंगे ग्रुप नंबर P में, ग्रुप नंबर 18 में P ब्लॉक एलिमेंट्स में. ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था. सो हाउ टू रिमेम्बर इट? इतनी बार यूज कर लिया कि याद ही हो गया है. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीरॉन एंड योर हीलियम. ठीक है. अगेन इफ यू वांटेड टू रिमाइंड कि कैसे याद करना बता दो मैम, तो हनी ने आकर जिनॉन रखा, तो ऐसे याद कर सकते हैं.
ही ने आकर जिनॉन रखा, ठीक है, ये ट्रिक है। वेल Z is equals to for all of them is gonna be like, it's gonna be like your helium is your 2, helium is your 2, neon is your 10, and your argon is your 18, krypton is your 36, xenon 54, radon is your 86. So directly अगर आप याद करें, that's gonna be great. And again the same trick you would be using 8 plus 18 plus then 18 then 32 and your 32. Okay. Talking about your electronic configuration for all of them is gonna be similar as 2s2, 2p, here's in with your 5, here's in with your 6. So what is your electronic configuration for your 18th group is ns2np6. What difference is 6? Okay? I hope all the elements in P block is clear to all of you. Now talking about the properties for P block elements, but let's talk about the properties, and we will be jumping on the topic of your D blocks. Okay, so what are the properties? So let's talk about the properties for P block element. Property number 1. Property number 1 are your that all the P block elements contains your metals, non-metals, and your metalloids. ठीक है, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आपके जो P block element है that is like your here's your boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, and its inserts. ठीक है, ऐसी तो है आपकी टेबल P block element की, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, here's is your helium and so on. ठीक है, अब यहाँ पे जो few elements है which is required by us to remember it, ठीक है, तो जो P block के एलिमेंट है अभी हमने डिस्कस किया फ्रॉम ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड योर 18. ठीक है, 13 का अभी हमने बताया तो बोरॉन फैमिली होती है, मैं ये क्यों लिख रही हूँ अभी मैं बताऊंगी आपको. जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड एवरीवन. सी एवरीवन. So it is started with your boron. ठीक है, 13 was your boron family like बैंगन, आलू, गाजर in one थैला. ठीक है, ये आपका था, ये तो था एवरीवन, बैंगन, आलू, गाजर इन वन थैला. ठीक है, यहाँ पे एक और एलिमेंट आएगा आपका, तो आई एम ड्राइंग अ टेबल सो यू कैन नॉट कंफ्यूज इट बिटवीन कि क्या याद करना है, कैसे मेटल एंड नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में फिक्स आउट है, वो मैं आपको क्लियर करूंगी. यहाँ पे कार्बन फैमिली में आपका था कहे, शिव जी, सुने, पार्वती. ठीक है, नाइट्रोजन में आपका था नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, बीमा. ऑक्सीजन में था ओल्ड स्टाइल से टे, हो. ठीक है, टॉकिंग अबाउट योर Fe chlorine, bromine, and your bromo, iodine, and AI. ठीक है, and then your comes your noble gases, helium, neon. It's your helium, neon, argon, krypton, and your xenon, and your individual xenon and radium. ठीक है, so this is your table for group number 13 to group number 18. अभी देखा था हम लोगों ने कितना बड़ा बड़ा टेबल बनाया था, here's what came in a small table. ठीक है, well group number 13 to group number 18. Now see what I wanted to say is from your including your boron, then your PASEIRN. So all the elements I'm just gonna put in this particular, I'm gonna draw it like that. ये जो ब्लैक में आपके ब्लैक बॉक्स में आपके पुटअप है, ये आपके हैं नॉन मेटल्स. ठीक है, ये आपके क्या है भुवन, नॉन मेटल्स. नाउ whom I am erasing it and again writing with black. ठीक है, अब जितने भी मैंने ब्लैक से लिखे हुए हैं डायरेक्टली दैट आर फॉर योर मेटलॉइड, ये आपके मेटलॉइड्स हैं. टॉकिंग अबाउट योर यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आने वाले हैं इन द ब्लॉक,
this particular block, that is gonna be your metals. That is gonna be your metals. देखो कितना आसान है याद करना. SiAsTe and Ai के ऊपर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग GeSbPo with SiAs and Te and Ai are your metalloids and your further left are your metals. ठीक है. Now talking about your second point which is required or the properties for p block elements are your second property. That was your first property. Second was your general electronic configuration. General electronic configuration. ठीक है. Lies from, as I told you, ns2 to np. And p कहाँ से कहाँ तक गए थे? 1 to 6. है ना? So this was your general electronic configuration for your p block element. And the third point, you if you want to include, you can include it. The ionization enthalpy for p block element is much more than your s block element. ठीक है. तो ये कुछ points थे या फिर properties थे to remind us of your p block element. Hopefully they are clear to each one of you. Now let's talk about your okay, now let's talk about your d block element. ठीक है. इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. We are going to talk you about your d block element. So let's jump it upon the d block element. Okay, d block element. Okay, what are your d block element, which is also known as your transition element? ठीक है. तो d block element में आपके आने वाले हैं 5D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज and your no more than 6D series. ठीक है. तो एक एक हम लोग चलो रिवाइज करते हैं, स्टार्टिंग विद योर 3D series that includes your d block element. 3D series के लिए further many mnemonics होंगी YouTube पे या other videos में, but this was actually mine truly. So what I made it for reminding is स्कूटर टीवी कार में फंसे कोई नहीं पूछेगा कॉपर जिंदगी. ठीक है. तो इट I can say ये रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है. वेल अपार्ट फ्रॉम जोक, इट वाजंट अ जोक बट anyway. So 3D सीरीज में आपके आएंगे स्कूटर टीवी कार में फंसे कोई नहीं पूछेगा कॉपर जिंदगी. So that was a trick for D block element for your 3D series. So I'm going to write it स्कूटर टीवी कार में फंसे कोई नहीं पूछेगा कॉपर जिंदगी. ठीक है. कोई नहीं पूछेगा कॉपर जिंदगी. आई होप दिस इज क्लियर. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. रिमाइंडेड ऑफ स्कूटर टीवी कार में फंसे कोई नहीं पूछेगा कॉपर जिंदगी भाई हो जाएगी आपकी. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट योर 4D सीरीज. अब 4D सीरीज में क्या आने वाला है एवरीवन, प्लीज पुट योर आई ऑन द बोर्ड. दैट इज गोना बी योर समवट इंटरेस्टिंग हो सकता है. ठीक है. डोंट लाफ इट. देखो, इफ जोक्स आर used for making the study or making the particular thing for your enhancement. ठीक है. कोई भी जोक अगर आपको बढ़ा रहा है so that's neither a joke. ठीक है. Similarly यहाँ पे कुछ ऐसे भी आ सकते हैं. You can laugh it at all but don't go on the serious way. Why we are using these mnemonics to make you learn. क्योंकि periodic table अगर आप ऐसे ही लर्न करने बैठ जाएंगे तो भाई ठीक है आप periodic ही याद कर रहे हैं, कोई और काम है नहीं आपके पास. ठीक है. तो 4D सीरीज में वी आर गोना हैव द ट्रिक लाइक यार जरूरी. ओके, यार जरूरी नहीं मास्टर. ठीक है. इट्स स्टार्ट विद योर MO. यार जरूरी नहीं मास्टर, या फिर बहुत लोग यूज करते हैं मोहब्बत. ठीक है. तो यार जरूरी नहीं मास्टर तुझे रुलाते रहे. यार जरूरी नहीं मास्टर तुझे रुलाते रहे. पेरेंट्स या फिर पंडित. ठीक है. बहुत लोग पंडित यूज करते हैं. पंडित अगर चाह दे. ठीक है. पंडित अगर चाह दे. तो मेनी ऑफ अस यूज लाइक यार जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पंडित अगर चाह दे, लाइक दैट. या फिर यार जरूरी नहीं मास्टर तेरे रुलाते रहे
पंडित अगर चाहते या फिर पेरेंट्स अगर चाहते, ठीक है, दोनों में से आपको जो एप्लीकेबल लगे यू कैन यूज इट। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई 4D सीरीज। टॉकिंग अबाउट योर 5D सीरीज विच इज अगेन बहुत लोग अलग अलग टाइप का यूज करते हैं, मैं भाई अपना यूज करती हूँ, तो तुम्हें बताती हूँ व्हाट इज गोना बी योर 5D सीरीज। Like in old movies we came across लोग हफ्ता लेते हैं, right? What is हफ्ता? In that time they show a knife that hey you give me the hafta. Hafta is like tax, like give me the money, I'm a gunda and every kind of thing, right? So that is the same goes like 5D series we came across ला हफ्ता वरना रह उस irritating पोपट के साथ और हो जा पागल, like that, okay? So ला हफ्ता, ठीक है, वरना रह उस इरिटेटिंग, ठीक है, दो और आएंगे यहाँ पे, इरिटेटिंग पोपट और पोपट के साथ और हो जा पागल, ठीक है, हो जा एच, ठीक है। तो क्या है ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल के साथ है साइलेंट, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई फॉर योर 5D सीरीज। टॉकिंग अबाउट योर 6D सीरीज दैट्स गोना बी आवर, ठीक है, ओके, टॉकिंग अबाउट योर 6D सीरीज, इसके लिए तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वन है तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, दैट इज योर अकेले आरडी शर्मा की मैथ बुक, ठीक है, अकेले आरडी शर्मा की मैथ बुक में है डिफिकल्ट सवाल रेट, ये ऐसे याद कर सकते हैं आप, आरडी, ठीक है, अकेले आरडी शर्मा, आरडी शर्मा, yes, तो हाउ टू रिमेम्बर इट, अकेले आर डी शर्मा बुक है, अकेले आर डी शर्मा, ठीक है, ऐसे अकेले आर डी शर्मा की बुक में है मैथ के डिफिकल्ट सवाल रेट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर मोर ओवर डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या आने वाला है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, ठीक है। नाउ लेट्स गोना टॉक यू अबाउट दी ट्रांजिशन एलिमेंट, क्यों डी ब्लॉक्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर डी ब्लॉक एलिमेंट और योर ट्रांजिशन एलिमेंट, लेट मी टेल यू कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर डी ब्लॉक एलिमेंट n-1 d, ठीक है, d का आपका n-1 from 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 and your n is 0 to 2, ठीक है, n-1 from d 1 to 10 and n-1 from d 1 to 10 and n s from 0 to 2. Now see, we know n is your valence electron, ठीक है, n is called your valence shell electron or your outermost shell. What are your n-1 called and n-2 and so on, ठीक है। So talking about your n-1, they are also called your penultimate cell, ठीक है, ये आपके वैलेंस शेल हो गए, ये है आपके penul, okay, it's your penultimate cell. n-1 is also called your penultimate cell and so on. Your n-2 अगर आ जाता है जो आपका आने वाला है in your f block element, n-2 में फिलअप होगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट शेल्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक कि भाई डी ब्लॉक्स को व्हाई दे आर कॉल्ड योर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। सो द टॉपिक इज योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ सी, ये बहुत ध्यान से समझना बिकॉज मेनी ऑफ यू कंफ्यूज, many of you got confused during understanding of your transition element. Yes, we will discuss the property, don't worry. तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनका इनकम्प्लीट होता है, क्या इनकम्प्लीट होता है, डी ऑर्बिटल इन देयर या फिर उनका ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट होगा, इन देयर ग्राउंड स्टेट, आइदर और आई कैन से और ऑक्सीडेशन
very clearly that what your transition elements are. ऐसे एलिमेंट्स जिनका इनकम्प्लीट होता है d orbital, right? उनकी filling in the d orbital had been not completed at all, and also which lies from the ground state or your oxidation state. Well, to understand this is your in the d block element we came across the group number 12. Group number 12. ठीक है. Now group number 12 में एक group number 12 में from I can say group number 12 में आपके चाहे 3D series हो चाहे 4D series हो or either your 5D series, you would came across the three elements of your group number 12 and they are not your transition element. You will say, how? You just told me D block element also known as transition element. In my book it is written D block is known as transition element. Who are you to say that transition element are not your 12 grouped element? Well, don't worry, I will be telling you. Group 12 includes your like Hg and your Zn and your Cd. ठीक है? So these three elements lies in group number 12 from 3D series, 4D series and your 5D series. ठीक है? ये तीनों एलिमेंट आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ Zn. Zn के लिए आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 30 होता है ना? Now, what is the electronic configuration of Zn? That is very short. It lies in the argon and from 4s2 to 3d10. ठीक है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Zn का आर्गन 4s2 to 3d10. अब होता क्या है एवरीवन सी, यहाँ पर जो आपका इफ आई आस्क, यहाँ पे हम लोग Zn से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ले लें बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn इज योर +2 होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. तो होगा क्या अगर हम लोग Zn से 2 इलेक्ट्रॉन ले भी ले, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उसके पास कितने भाई इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? आर्गन 3d. फिर भी उसका जो d ऑर्बिटल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट से उसको कहेंगे, ठीक है, तो उसके ग्राउंड स्टेट में या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो d ऑर्बिटल है वो फुलफिल्ड है, इनकम्प्लीट नहीं है एज. और हमारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो कहता है कि इनकम्प्लीट होना चाहिए उसका d ऑर्बिटल जो कि फुलफिल्ड है. सिमिलर गोज फॉर योर Hg एंड Cd. d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट कॉल्ड योर ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है. ऑल्सो रिमाइंडेड कि एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन अगर हो सकता है एग्जाम में, यू माइट कैन रिमेंबर इट दैट सी वेट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन अकर. दिस इज योर ओके yes, this is your transition element and this is your D block. ठीक है, ये याद रखो आप लोग, इजिली रिमाइंड कर सकते. ठीक है. व्हाट इज इट कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट आर योर डी ब्लॉक. डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मतलब डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें से कुछ आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है. व्हाट इट मींस ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट आर योर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट योर ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, याद रखना इसे. Talking about the properties for your D block element, that is gonna be as, ठीक है, इसकी properties कुछ interesting होने वाली है. So what is the properties for your D block element? Number 1. Okay, number 1 goes as that D block element are hard, ductile and malleable. ठीक है, D block element क्या है आपके? हार्ड है, डक्टाइल, मैलिएबल है. ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है आपके? हार्ड, डक्टाइल, मैलिएबल मेटल. टॉकिंग अबाउट योर सेकंड पॉइंट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइज फ्रॉम n-1 d 1 to 10 and your ns 0 to 2. ठीक है. थर्ड पॉइंट है आपका फॉर योर डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज योर दे हैव हायर melting point and boiling point. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है. तो आई होप यू आर क्लियर विद डी ब्लॉक एलिमेंट और क्या क्या जरूरी चीजें थी इसमें टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स जंप अपॉन योर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे दैट इज गोना बी योर एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. Now in F block element we will be discussing the further classification of F block element as we know they are your lanthanoids and actinoids.
No more important to remember the element. If you want, there are many further tricks to remember them all. But what the main thing over here is 4F series and your 5F series. Lies from Z is equals to, okay, lantinoid light from 58 to 71 and actinoid light from 98 to 103. Remember this? Remember this? This includes your 14 elements and again this includes your 14th element. Okay? Now, talking about your properties for F block element that came across here, number one is your general electronic configuration for your F block element. यहाँ पे मैंने बताया था आपको your anti-penultimate shells will also come. So yes, your general electronic configuration for your F block element is n minus 2 from your F block from 1 to 14. यहाँ पे देख लीजिए 1 to 14 element है. Then your n minus 1 the 0 to 1 and n, that is your 2. Okay, this is your general electronic configuration for all the element that's gonna come in the F block elements. Yes, you are saying right. In the F block elements, the elements is gonna have the very much higher melting and boiling point. And what more is required or here is remember is that most of the actinoids are your higher radioactive elements. And what more I can tell you key. Now in the F block element, more or I can tell you in F block element यहाँ पे आपके only two liquids are there which works at STP, that is your number one element, and number two that works your STP पे liquid है, that is your number one as bromine and number two is your no more than mercury, Hg and your Br. And yes, your Br is no more than non-metals. Okay? And also the third point is that all the metals here are your heavy metals. Okay? And if you want the trick to remember F block element, it could be like बता ही देती हूँ, ठीक है? कहोगे इतनी छोटी. Okay. So I hope that was much clear to you, the properties for F block element. So what are the elements lies in your actinoids and lanthanoids की बात कर सकते हैं. सबसे पहले lanthanoid के लिए आपके पास याद होना चाहिए trick as let me write the element that's going to be lie in this, that's going to be your इसके बाद फिर ठीक है. तो ये पर्टिकुलर आपकी लैंथेनॉइड्स की लिस्ट है फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट. इफ यू वांट द ट्रिक you can claim across like सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यूं गदगद दिल हुआ तब मेरा, यूं वापस आ जाओ याद आ. ठीक है? So like that. Now moving ahead to like your actinoids, what are the trick and what are the element that's gonna be common? This is your number one is gonna be your TH, PA, U, and P. So this is a list for your actinoids in your F block element. Hopefully clear to every one of you. Okay? Now we have today discussed what? You're all about F block element, P block element, and your D block element. We have also discussed trends in periodic table, that is your no more than atomic radius, electronegativity, and your furthermore your ionization energy or enthalpy. Now I will be back moving ahead to the chapter. Moreover,
telling you what comes in the periodic table. And if you enjoyed and understand, and if you have came across any kind of query, you can write in the comment below. I'll for sure gonna help you in my upcoming video to that keep learning and keep subscribing. Thank you.